Hey, are you student of class 10th CBSE? एग्जाम्स पास आ रहे हैं, एग्जाम्स की टेंशन हो रही है एंड यू नो दैट सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं एंड यू वांट दैट डिटेल्ड सॉल्यूशंस. So, you're at the right place because in today's video I'm going to discuss detailed solutions of CBSE class 10th term 2 sample papers. Maths, standard maths. So, if you want the detailed answer, stay till the end of the video. Hey everyone, I am Meenu Gera, online mathematics research founder of Meenu's Maths and obviously your tutor. And today's video we are going to discuss sample paper class 10th term 2 maths section A. So without wasting time, let's get started. First of all, we are discussing standard paper. Fine, class 10 term 2. तो सबसे पहले हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि सिंपल जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए बिल्कुल सेम है. 2 आवर्स मिलने वाले हैं आपको एंड 40 मार्क्स. आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, A, B, C और 14 क्वेश्चंस हैं. 14 क्वेश्चंस, 3 सेक्शंस. All sections are compulsory, all questions are compulsory, but तीनों sections में आपको internal choice मिलने वाली है. Section A में 2 choices है, Section B में 1 question में internal choice है और Section C में भी 1 question में internal choice है. Fine. And Section जो C है आपका, that will carry 2 case study based question also. Fine. मार्किंग का क्या डिफरेंस है? इन सेक्शन ए 2 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन. फाइन, दैट विल बी 12 क्वेश्चन टोटल. इन सेक्शन बी 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो 12 मार्क्स. एंड सेक्शन सी 4 मार्कर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 16. फाइन, दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी इन योर एग्जाम. Let's talk about section A, question number 1. As you already know, section A 2 marks each, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलने वाले, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही डायरेक्टली आपको चॉइस मिल गई है. लुक एट दिस, चॉइस के दोनों पार्ट्स AP से हैं. फाइन, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 when the AP is given this. AP is given here 6, 9, 12, 15, and you are supposed to find out A25 minus A15. That means it is clear that you are going to use AN formula. ठीक है, AN का फॉर्मूला आपको आता है, AN is equal to A plus N minus 1D. So I can say that A plus 24D, N is 25, N minus 1 is 24, minus A15, A plus 14D. Okay, we can solve this first. This is A plus 24D minus A minus 14D, and it is directly 10D. You can look the value of D here. D is 3. Put the value of D and you will get the answer. Isn't it easy? Done. 2 marks, done. Now let's talk about the second part. First question, the second option. If 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term. बेटा सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके जस्ट मेक द स्टेटमेंट. व्हाट आर दे सेइंग? 7 times the 7th term. This is 7th term. 7 times the 7th term is equal to 5 times the 5th term. Then find the value of 12th term. If we want to find out the 12th term, that will be A plus 11D. Again the same formula. AN is equal to A plus N minus 1D. Fine. Okay, look at this. कि यहाँ पे हमें क्या समझ आता है?
if I say a plus 7d है ना, this is 60, सेवंथ टर्म है 60, 5a plus 4d. If I say 7a plus 42d, that is equal to 5a plus 20d. अब एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जब भी हमें कोई एनी टर्म फाइंड आउट करनी है, देन वी नीड a and d both. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही कंडीशन है. इफ वी हैव ओनली वन कंडीशन, वी कांट फाइंड आउट a and d सेपरेटली. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? एक बात याद रखना, क्वेश्चन को किए बिना छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. जस्ट ट्राई दैट, समथिंग विल हैपन कि हमें एग्जैक्टली आंसर्स मिल जाएंगे. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? इफ आई से 7a minus 5a plus 42d minus 20d is equal to 0. Okay, is equal to 0. So this is 2a plus 42 minus 20, that is 22d is equal to 0. It means a plus 11d is 0. 2 common आया, a plus 11d is 0. So directly we can say that 12th term is 0 and we are done with this. Let's get started with question number 2. अब question number 2 में मैं पहले आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे है misprint, यहाँ पे +9 होगा, then we can solve it. How do I know? Because when it was not being solved, then I went to the solutions, और solutions में ये +9 के साथ solve. Fine. So we will go for that. So first of all, it is not in standard form. पहले हम इसकी standard form बनाएंगे. After multiplying this, को multiply करके standard form आ जाएगी. That is 5m x square minus 6m x plus 9 is equal to 0. अब हमारे पास standard form है. Fine. So it has two equal roots. If I talk about the condition of equal roots, what do you know what's that? Yes, discriminant 0. That means d is equal to 0. What is the value of discriminant? That is b square minus 4ac is equal to 0. तो अब इसमें a, b, c क्या होता है? a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is constant. Just to write down the value here, minus 6m square. I'm writing here b square minus 4ac is equal to 0, means minus 6m whole square minus 4. What is the value of a? That is 5m. C, that is 9, equal to 0. 36m square minus 9 4s are 36, 36 5s are 180m is equal to 0. Fine. 36m is common here. m minus 36 5s are. ये स्टेप हम ऊपर भी कर सकते थे, कॉमन डायरेक्ट भी ले सकते हैं. 36m is equal to 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? It means 36m is equal to 0 or m minus 5 is equal to 0. From here we can say m is equal to 0 और यहाँ से m is equal to 5. So these two are answer. But m is equal to 0 is not possible. Why? क्योंकि अगर m 0 हो जाएगा तो x square का coefficient ही 0 हो जाएगा and that will be not quadratic equation itself. So this is impossible. Final answer is m is equal to 5. Now let's get started with question number 3. From a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle C. Fine. That means जिसकी radius R है और जिसका center है O पर. If we are given that OP is 2R, we are supposed to find out angle APB. Angle APB. That means we are supposed to find out this angle. And after that, we are supposed to find out that which type of triangle is it. Okay. As we already know that angle between radius and tangent, this is 90 degrees. Fine. So we can say that angle PAO is right angle triangle.
जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएगा आपके माइंड में यू नो देयर शुड बी टू थिंग्स, वन इज पाइथागोरस एंड वन इज ट्रिग्नोमेट्री. सो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, व्हेन वी आर सपोज टू फाइंड आउट सम एंगल, तो पाइथागोरस तो बेटे काम नहीं आएगी. सो हमें क्या करना चाहिए, वी विल गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्री. Now look at this. If I talk about this angle, if I talk about this angle, for this angle AO, that means R, that is perpendicular, and this OP, that means this 2R, that is hypotenuse. Means perpendicular or hypotenuse available hai. If I say this angle is theta, so what is the relation between perpendicular and hypotenuse? That is sine. Fine. So I can say that sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Is it clear? ये है 1/2. So sine की वैल्यू 1/2 कब होती है? That is at 30 degree. Sine 30 is 1/2. This is 30 degree. Done. So theta is done. Now as we know that this APB is double of theta, because ये जो लाइन PO है ना जो सेंटर से मैच करती है एक्सटर्नल पॉइंट को, that bisect the angle. So we can say that angle APB is twice of theta. That means 2 multiply 30 means directly में 60 लिखेंगे. ठीक है बेटे? So now what type of triangle is this? Now look at this very carefully. If I talk about this triangle APB, एक एंगल हमने बोला 60 डिग्री. अभी ध्यान से समझना, इफ आई से PA इज इक्वल टू PB, यू नो दैट. इफ आई से PA इज इक्वल टू PB, क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स जाती हैं बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. इफ PA इज इक्वल टू PB, तो अगर मैं ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, इफ आई से दीज टू आर इक्वल, these two are equal, one is 60 degree, so these two, okay, just write it there. If I talk about in triangle PAB, यहाँ पे PAB में हम बात करते हैं एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B, these are 180 by angle sum property. Fine. एंगल P हमने अभी फाइंड आउट किया था 60 डिग्री, और A और B I am saying they are equal. I am writing here twice of angle A, that is 180. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, 60 उधर जाएगा, 120/2, यानी कि A की वैल्यू आ गई है 60. ठीक है, A भी 60, B भी 60, P तो पहले ही 60 था, तो कौन सा हुआ ट्रायंगल? सॉरी फॉर द नॉइज दैट इज कमिंग आउटसाइड, ट्रैफिक नॉइज. हाँ, सो सारे एंगल 60 है, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. Fine, equilateral triangle. Okay, we are done with the third question. Let's get started with question number 4. The curved surface area of right circular cone is given. सबसे पहले शेप देखना है. Shape is cone. What is the formula of curved surface area? That is, if I talk about the curved surface area, that is, okay, CSA is given. पहले ये लिख लेते हैं, 12,320 centimeter square. What is the formula of CSA of cone? That is pi RL. सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर ले रहे हैं. फाइन. आई होप आपको 9th क्लास से ऑलरेडी लर्न होंगे. नहीं लर्न है तो 9th क्लास की बुक उठाओ, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक बार लर्न करो. ओके, सो अभी फाइंड आउट क्या करना है. If the radius of its base is 56, radius भी given है, radius is given 56, we can write here 56. And this is given. तो यहां से हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बट व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, वी आर सपोज टू फाइंड आउट हाइट. इफ आई टॉक अबाउट कोन ना, कोन में 2 हाइट्स होती हैं, वन इज द स्ट्रेट हाइट, वन इज द स्लैंट हाइट. L है स्लैंट हाइट, हमारे पास यहाँ पे स्लैंट हाइट की वैल्यू है. मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. दैट इज 12,320. ये जो 22/7 है, इट विल बिकम 7/22 और 56 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, ये सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L. 7 8 56, क्वाइट सिंपल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट, जिस तरह से आपको इजी लगे ना आप वैसे कर सकते हो. फाइन.
Let's talk about these two. I am just going for table of 2. This is 6160. Fine. 11 and 616. इसको देख के आपके माइंड में कुछ आता है that it can be done with the table of 11 directly. 11 5s are 55. This is 66. 11 6s are 66. 5 68. 7s are 56. 70. That means L is 70. हाथ में यूनिट भी लगा दो as it was centimeter, 70 centimeter. But we are supposed to find out height. अब हाइट का डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न है, देन इट इज गुड, इट इज दिस. अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो, आराम से हो जाएगा. ठीक है. सो L is given 70, R is given, this is 56. Fine. And square root, इसको सॉल्व कर लो, you will get the answer. After solving this, you will get 42 centimeter and we are done with 4th question. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एंड हैव यू नोटिस्ड हम स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे हैं, बट सैंपल पेपर का जो लेवल है दैट इज नॉट टू मच हाई. वी कैन डू विद द प्रैक्टिस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. और किसी भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको लगता है कि यस सैंपल पेपर इज शोइंग अस दैट डू सम प्रैक्टिस फ्रॉम अदर बुक्स आल्सो, देन गो फॉर लिटिल बिट फॉर अदर बुक्स. कोई भी ज्यादा बुक्स को लेके काम करने की नीड नहीं है. फाइन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन. 5th क्वेश्चन. मिसेस गर्ग recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks. Model marks means we are talking about the mode. ठीक है. तो जैसी मोड आया भाई, फॉर्मूला याद है आपको मोड का? Of the students of class as 45. Mode is given here. Mode is given here. Fine. This is mode. While printing the data, a blank was left. यहाँ पे हमें एक blank show हो रहा है यहाँ पे. Fine. So find the missing frequency in the table given below. ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है. चलिए सबसे पहले हम मॉडल मार्क्स या फिर जिसे मैं मोड कह गई हूँ वो लिख लेते हैं. दैट इज गिवन 45. अभी बड़े ध्यान से समझना, जब हमें मोड फाइंड आउट करना होता है ना, वी हैव दिस फॉर्मूला. मोड का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज L प्लस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. माइनस F0 भी है यहाँ पे. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. अब बेटा अगर इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज में आपको ये नॉलेज नहीं है कि F0, F1, F2 ये सब क्या है, एक तो बेटा इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है. एंड द अदर थिंग, इस चैप्टर में ये जो सिंबल्स है इन पे ध्यान देना है. ठीक है. पहले बात करते हैं L की. L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो ये मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो. लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग है. अगर फ्रीक्वेंसी ही मिसिंग है तो मॉडल क्लास कैसे देखते हैं? आपने यहां से देखना है मॉडल क्लास. ये जो हमारा मोड है ना, मॉडल मार्क्स है, दैट इज 45. वो 45 कौन सी क्लास में है? 45 कम्स बिटवीन 40 एंड 60. 45 comes between 40 and 60. That means ये है हमारी मॉडल क्लास. फाइनल. जब मॉडल क्लास मिल गई है तो उसका जो लोअर लिमिट है ना, दैट इज L. L मिल गया. ठीक है. एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स. इफ आई टॉक अबाउट F1, F1 is the frequency of model class. F0 the preceding one, F2 the succeeding one. इनको पहले मेंशन करते हैं. As this is model class, ये है F1, F0 preceding class, F2 the succeeding class, and this is lower marks. Sorry, this is lower limit. So what is H? H is class interval. 0, 20, 20, 20, 40, 40, 60 class interval जिसका डिफरेंस है. That means this is 20.
h is given 20. ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. So I am doing here, if I put mod 45 is equal to L की value 40 minus F1 we are supposed to find out. F0 is 10 upon 2F1. That means 2 multiply 10 minus F0. F0 क्या है? 10 minus F2. F2 है 6 multiplied by 20. Fine. Now we will solve it. यहाँ पे F1 है 2F1. फाइन, दैट वाज नॉट 10. F1 तो हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करना है इसको. दिस इज प्लस 45. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 40 है ना, इसको आप पुट इट हियर. दिस इज माइनस हो गया. F1 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस दिस इज 16 multiplied by 20. Now this is 5. आप 20 को भी इधर ले आओ. This is F1 minus 10 upon 2F1 minus 16. अब इसको सॉल्व करते हैं. This is 1 by 4. कैंसिल हो गया. 1 by 4. 1 by 4 is equal to F1 minus 10 upon 2F1 minus 16. आप सब अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो. There is nothing special in this. Minus 40, जिस तरह से भी आपको इजी लगता है ना कैलकुलेशन, do that. So if I say minus 16, this minus 40 has become plus 40. 4F1 minus 2F1, ये बन गया 2F1. And this is after subtracting, I got 24. Fine. And F1 is 12 here. And we are done with that. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज. जितने साल की ऋतु है, अगर वो उससे 5 years कम होती, then the square of her age would have been this. There is some condition given. What is her present age? What is her present age? So first of all, let her present age is x. Let her present age is x. Now, if Ritu is x years at this time, so if Ritu were younger by 5 years, अभी x है, लेकिन अगर वो x minus 5 होती, x से 5 कम होती, then that means x minus 5. अगर वो x minus 5 होती, then the square of her age, उसकी age x minus 5 है, then the square of her age is would have been 11 more than 5 times her present age. Present age को हमने कितना x लिया हुआ है? You will write down, let the present age is x. Fine. Present age is x. If she were 5 years younger than that, that is x minus 5. According to question, अगर वो 5 year कम होती ना, x minus 5 whole square, that is she is 5 times 11 more than 5 times her age. X 5 times her age, 11 more, that is 5x plus 11. This is the condition. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में ना वर्ड्स में से इक्वेशन को फाइंड आउट करना आना चाहिए. सॉल्व तो हम कर लेंगे अच्छे से, उसको पहले उसे एग्जैक्टली फॉर्म कर ले. दैट मीन्स फॉर्मेशन आ जाए. यस, इक्वेशन इज डन. कंडीशन हमने लिख ली. अब इसको सॉल्व करना है. x minus 5 whole square, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. Fine. This is 5x plus 11. इसको जल्दी से सॉल्व कर लो. minus 10x, ये minus 5x भी इधर आएगा, minus 15x plus 25 minus 11. That is 14 is equal to 0. This is the equation. Now we can find out the value of x and we can give the answer. वैसे तो बेटा आपको जो मेथड इजी लगे आप वो यूज करो, ठीक है. बट यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत इजीली हो गई, देन गो फॉर स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग आई होप आप सबको आती है. अगर नहीं आती है तो यू विल गेट द वीडियो लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन आल्सो. फाइन. 14x minus x plus 14 is equal to 0.
and after solving it, I am finding this thing. Okay, I hope you know. If you don't know, I want to tell you. If I talk about minus x plus 14, there is nothing common, so we will say that 1 is common. And if, as I have taken minus 1 outside, the positive will become negative also. Is it clear? Now it is x minus 14, x minus 1 is equal to 0. So we have two possibilities. या तो ऋतु 14 years की है इस वक्त, या फिर ऋतु 1 year की है. अगर हम बात करें 14 years की है, तो 5 years पहले क्वाइट नेचुरल शी विल बी 9. शी वाज 9. ठीक है. लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 5 year पहले जाने पे वो तो नेगेटिव हो जाएगी एज. सो दिस इज इम्पॉसिबल. सो आवर फाइनल आंसर इज x is equal to 14 years. Whenever you have some question like problem solving, word problems, don't forget, write down the answer in proper statement, words. If question is in words, write down the answer in words. Fine. Let's talk about next question. अभी जैसे हमने पहले ही कहा था सेक्शन ए में ना 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलने वाली है. तो ये एक हमें फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस मिली, एक चॉइस हमें यहाँ पे मिल गई है. अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस चल रहे थे ना, मोस्टली वो फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मींस लेवल जो था उनका वही चल रहा था. लेकिन जो अब ये वाला क्वेश्चन आया है ना, दिस इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू अननोन ए बी सी पी क्यू समथिंग इस लाइक टाइप के ना क्वेश्चंस नहीं है. वहां पे जो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस चलती है ना, वो नंबर्स के अकॉर्डिंगली चलती है. सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो अभी देखते हैं क्या है. दिस इज 9x स्क्वेयर माइनस 6px प्लस p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर. वी आर जस्ट सपोज टू सॉल्व इट. ठीक है. सो वैसे तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्यों? ऐसे कंडीशन में ना, अगर आप स्प्लिटिंग के चक्कर में पड़ोगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट. जब भी आपको इस तरह से कोई अननोन नजर आते हैं, these are actually p here, p q are not variables, they are non variable, but their values are not given. numbers नहीं है ना, सिंपल numbers नहीं. ठीक है. सो अगर हमें फाइंड आउट करना है, वी आर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. हम सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने का मतलब वी आर गोइंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. Don't forget, whenever you are taking the values of a, b and c, उसका साइन साथ में लेना है. Minus b, b is already negative here. This is minus 6b plus minus b square minus 6b whole square minus 4ac. A is 9 here and c's value is p square minus q square. I am writing it here. Fine. Upon 2a, 2 multiply 9, as we know that 9 is the value of a. अब इसको सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 6p प्लस माइनस रूट के अंदर 6p होल स्क्वायर यानी कि 36p स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36. ब्रैकेट में क्या है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. 9 2 जा 18. आई एम राइटिंग हियर x इज इक्वल टू 6p. बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है. 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर. दिस माइनस माइनस हैज बिकम प्लस प्लस 36q स्क्वायर. अब आपको पता चल रहा है. ये देखो बेटा, 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही होगा. और जो बच गया है आपके पास, वो बड़े आराम से स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. So x is equal to 6p plus minus 36q square, इसका रूट 36 का रूट 6, q square का रूट q upon 18. Let's take common from here 6. ये ना प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा, बिकॉज आप सबको पता है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो प्लस माइनस है वहीं से हमें 2 आंसर्स मिलते हैं. दैट हैज बिकम 18. 6 3 जा 18. आंसर आ गया p प्लस माइनस q अपॉन 3. आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. x इज इक्वल टू p प्लस q बाय 3 एंड x इज इक्वल टू
x is equal to p minus q by 3. And we are done with the last question of section A. So students, we have completed section A of sample paper maths class 10th term 2, and I hope you like it. If you like it, don't forget to hit the like button. And if you want to see the section B detailed solution, don't forget to subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So till that, happy learning to all of you. Bye bye.